Space is kind of money. We always think that we don't have enough and want some more. So in this video, I put together some small space organization tips for you guys. Because whether you live in a big space or a small space, you probably want to know how to organize it. Moreover, अगर आप master कर लेते हैं small space को organize करना, then hardly matters आप किसी बड़ी जगह पे रह रहे हैं या फिर छोटी जगह पे. So before starting a video, just a quick reminder, if you haven't done yet, kindly subscribe to my channel Personal Diaries and give this video a big thumbs up if you feel like that you also running out of space. किसी भी घर के स्टोरेज स्पेस को मैक्सिमाइज करने के लिए बेसिक रूल होता है डू नॉट वेस्ट योर वर्टिकल स्पेस. क्योंकि अगर आप हॉरिजॉन्टल स्पेस ज्यादा यूज करेंगे, एक तो वो विजुअल क्लटर लगेगा, दूसरी बात ज्यादा स्पेस लेगा और आपके रूम को स्क्वीज डाउन कर देगा या सिकोड़ देगा. बेस्ट टिप इज डू नॉट वेस्ट योर वर्टिकल स्पेस. As you can see that this is a slim and space saver shoe rack which doesn't create any kind of visual clutter and perfect for utilizing your vertical space. आप जब भी इस तरीके की स्पेस के लिए कोई यूनिट देखें तो it should be tall and skinny. This is a wall mounted shoe rack and can fit in any corner of your home, even outside of the home, because it comes with a lock and key arrangement. If I talk about its capacity, it can contain 9 pairs of shoes. I hope this example helps you to understand कि अगर आप ट्रेडिशनल शू रैक लेते, इंस्टॉल करते तो आपका कितना सारा स्पेस वेस्ट हो जाता. So you have to be very cautious while choosing your furniture unit. Look for something that can help you to increase the storage but with minimum space taken. Second best thing to maximize your vertical space will be कमांड हुक्स. दिस इज सो इजी टू यूज एंड रेंटर फ्रेंडली. क्योंकि किसी भी रेंटेड अपार्टमेंट में आपको ड्रिल करना या स्क्रूज लगाना अलाउड नहीं होता है. तो दिस इज सच अ मिराकुलस प्रोडक्ट टू यूज. दिस इज वेरी इजी टू यूज प्रोडक्ट. यू जस्ट हैव टू स्टिक दिस साइड ओवर द वॉल एंड ये साइड में आपको पील कर देना है. देन जस्ट वेट फॉर 1 आवर और सो और सिंपली कमांड हुक को आपको उसके ऊपर स्टिक कर देना है एंड यू आर गुड टू गो. प्लस आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन भी है दिस वन हुक होल्ड 1.3 kgs ऑफ वेट. यू कैन स्टिक देम एट द डोर्स ऑफ योर अलमीरा टू हैंग सम एक्स्ट्रा स्टफ. यू कैन यूज देम इन योर वॉशरूम्स टू कीप द वाइपर्स ऑफ द ग्राउंड, which actually helps in maintaining the hygiene. Moving on, this little guy can even handles your wires hanging clumsily. You can even use them for hanging your towels, your dustpans in your under sink area for keeping your cleaning supplies off the ground. Another useful tip will be use your dead space. अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो आपके घर में भी आपको काफ़ी जगह डेड स्पेस की तरह आपको मिल जाएगी, चाहे वो अंडर सिंक हो, चाहे वो बेड साइड की वॉल हो. तो आप ये डेड स्पेस की स्टोरेज को मैक्सिमाइज कर सकते हैं वॉल माउंटेड चीजें लगा के. This wall mounted things proves to be such a space saver. It allows not only save the space beautifully but also provide extra space to keep other furniture units as well. These wall mounted things prove such a help especially for the small apartments. जैसा कि आप देख सकते हो केवल बास्केट डोर पे वॉल माउंट करने से ही कितनी स्पेस क्रिएट हो गई है अंडर सिंक एरिया में. एंड बास्केट का डोर पे होने के कारण उनमें रखी हुए प्रोडक्ट्स अप्रोच करना भी काफ़ी इजी हो गया है. और जो अब तक डेड स्पेस थी वही स्पेस स्टोरेज यूनिट भी बन गई है. मूविंग ऑन, इसी तरीके की डेड स्पेस थी बेड साइड एंड स्टडी टेबल के बीच में, जहां हमने एक बुक शेल्फ हैंग कर दिया है एंड मैगजीन होल्डर भी वॉल माउंट किया है, जिससे कि बुक की स्टोरेज भी बढ़ गई है एंड स्टडी टेबल पर एम्प्टी स्पेस भी क्रिएट हो गया है.
आप इस मैगजीन होल्डर में डेली पीरियोडिकल्स भी रख सकते हैं, जिसकी वजह से पेपर क्लटर भी काफ़ी कम हो जाएगा। Another space saver will be use the reuse things, especially these mason jars or glass bottles. These are really great because they are made up of glass, which is really good for storing your food, especially your spices, as these glass bottles keep the aroma and flavor of the spices intact. Even you can use these mason jars for storing your coffee filters, cupcake wrappers, some cotton balls, your tea bags, and many other things. So friends, that's not all. I have many other ideas for storage and home organization which I cannot cover today. So for that, don't forget to watch my next video for some more clever tips on space saving and home organization. See you in my next video. Till then, stay happy, stay blessed, lots and lots of love and peace to you guys. Bye friends.